Hello friends, welcome to another tutorial. Today we will discuss about the lac operon system. As we all know that the gene regulation process in prokaryote and eukaryotes have different levels of controls. If we talk about the gene expression control, if we talk about the gene expression control, prokaryote have transcriptional prokaryote have transcriptional level of gene control. Why? If we talk about the eukaryote, they have different levels of gene regulation, like on chromatins. Chromatins means euchromatization and heterochromatization. So in eukaryotes, the DNA can be converted into euchromatin and euchromatin, heterochromatin, and heterochromatin can be converted into euchromatin, and this process is continue many times. As we know that the euchromatin and heterochromatin is further of two type, so only facultative euchromatin and facultative heterochromatin can be converted into one form to another form and constitute a will level change. So that is the different things. Or another is the protein level, that is the activation and inactivation of protein, activation and inactivation of proteins. Like a very simple example, we know that the blood clotting factor, that is one protein, is known as the fibrinogen. It will convert it into fibrin after cleavage of its cap. So that is the another level of activation on the basis of protein activation and inactive. The fibrinogen is the inactive form and the fibrin is the active form. Similarly, just say another example is trips. Trypsinogen get later on converted into trypsin, pepsin. There is a lot of example of at protein level activation of protein or inactivation of protein. Similarly, there is another level of control, that is the ubiquitination. यानी कि जो प्रोटीन बनती है, the protein synthesized and after transcription it maybe goes under the ubiquitination. Ubiquitination means the degradation of protein. Degradation of protein. Further, there is another, that is the methylation of protein. There is a lot of levels. Let us talk about the इन प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स में जो रेगुलेशन होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, और ये बात डिस्क्राइब की थी फ्रांकोइस जैकब एंड द Jacob Monod. Simply they both are known as the Jacob and Monod's experiment, or they describe the lac operon system in bacteria. What is lac operon? Why it is known as the lac operon? We all know that there is a sugar known as the lactose. Mostly, we all know that this sugar is present in milk, very much in fat. मीठा दूध जो होता है, एक स्वीट मिल्क, जो मतलब भैंस का दूध होता है, mostly in buffalo milk, that is the lactose. And what we say that this is the bacteria. This is the E. coli bacteria. इन्होंने एक्चुअल में E. coli बैक्टीरिया के अंदर ये खोज की थी.
तो ये इकोलाई बैक्टीरिया है और इसको हमने एक न्यूट्रेंट मीडिया पे रख लिया। दिस इज अ बैटरी प्लेट, this is battery plate, and this is the nutrient and media, and it contain lactose. First, listen it. And this is the another battery plate, and here is the bacteria. ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। अब देखो, it is without lactose. Lactose is absent, lactose is present. यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है, यहाँ पर लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। तो व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होगा, होना भी क्या चाहिए। जैसे यहाँ लैक्टोज है तो ये लैक्टोज डिफ्यूज करके थोड़ी बहुत लैक्टोज इस बैक्टीरिया के अंदर जाएगी, और यहाँ बैक्टीरिया के पास कुछ जीन मौजूद है। तो लैक्टोज, एक्चुअल में जो लैक्टोज होती है, लैक्टोज जैसी बैक्टीरिया के अंदर जाएगी, इट विल ब्रेक डाउन इनटू ए इंटरमीडिएट दैट इज नोन एज द एलोलैक्टोज, and this further it will convert it into beta galactose, converted into beta galactose. Okay, and this beta galactose is further degraded and energy is derived, जिससे क्या निकाली जाएगी, एनर्जी, और विच इज यूज्ड बाय द बैक्टीरिया। अब देखो ये, इफ द मीडिया डज नॉट कंटेन लैक्टोज, व्हाई द जीन इज एक्सप्रेस, ये जीन क्यों एक्टिवेट हो जब लैक्टोज ही नहीं है। तो जब लैक्टोज मौजूद होगी तो ये जीन एक्टिवेट होगा। तो एक्चुअली देयर इज जीन्स फॉर डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन ऑफ दिस लैक्टोज, देयर इज 3 जीन्स आर एक्टिवेटेड इन ए बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल जो प्रोकैरियोट्स की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है। एक साथ में कई सारे जीन्स का वहाँ पर एक्टिवेशन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक होती है। एक बार में एक ही जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक होती है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंड देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस। देखो, ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है,